Assalamu alaikum everybody, can you all hear me? Assalamu alaikum बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay, sorry for the delay, आज थोड़ी सी नेटवर्क हाँ इश्यूज मैम जी मैम आ रही है। ओके नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ी सी क्लास आप लोगों की डिले हो गई. We'll start with the lecture right away because I know आप लोगों का भी मिड एग्ज़ाम है. कितने बजे मिड का एक पेपर है आप लोगों का? मैम मैम 11 ओके ओके बेटा we'll start with the lecture. ठीक है. Previously in the last lecture we had completed this lecture. थोड़ा बहुत हमने start किया था. ठीक है, हमने stress को study किया था. We talked about the different outcomes of stress. ठीक है, types of stresses हमने देखे थे. What is burnout, responses to stress. ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं. Today we'll start with the stress management. ठीक है, कि stress की management कैसे होती है, how we can overcome stress. उसके different हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से हम डिफरेंट वेज से अपना स्ट्रेस जो है उसको लिमिट कर सकते हैं. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू कैन हेयर मी क्लियरली. मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? प्लीज़ मुझे कोई एक दफ़ा बता दें दैट यू ऑल कैन हेयर मी क्लियरली सो आई कैन प्रोसीड विद द लेक्चर. Yes, ma'am. Okay, so we'll start with stress management. What is stress management? Managing stress is vital for the health and the survival of a person. Poorly managed stress can result in disease and impairs the quality of life. ठीक है, तो basically stress आपको जिस भी तरीके का हो रहा है, whether it's a physical stress or a behavioral stress or emotional stress, ठीक है, उसकी maintenance जो है वो आपकी health के लिए ज़रूरी होती है. Because we all know that chronic stress जो है वो आपको depression और suicidal thoughts की तरफ जो है वो provoke कर लेता है. So उसके लिए we have some negative coping methods which we need to avoid. ठीक है, if we are trying to avoid ourselves or trying to manage the stress, we need to avoid 4 habits. First of all, self blaming. ठीक है, that for whatever reason जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आई है उसके लिए आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दें. ठीक है, सेल्फ ब्लेमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको स्ट्रेस की तरफ मजीद लेकर जाती है. नेक्स्ट इज विशफुल थिंकिंग. विशफुल थिंकिंग मीन्स टू से दैट यू आर थिंकिंग अबाउट a scenario that cannot happen in real life. ठीक है, जो कि ऑलरेडी एक नेगेटिव चीज़ हो चुकी है बट आप स्टिल उसके बारे में सोचें दैट काश ऐसा ना होता, काश इस तरह का हो जाता. ठीक है, तो यू शुड एक्सेप्ट कि जो चीज़ एक हो चुकी है और यू शुड ट्राई टू अवॉइड विशफुल थिंकिंग. Avoidance and taking things personally. Avoidance means to say that you should try to avoid thinking about situations that are bringing you stress and depression. अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा ट्रॉमा है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में उस चीज़ के बारे में सोचना जो है उसको कम कर दें. सो एज अ रिजल्ट यू कैन कम आउट ऑफ द सिचुएशन. ठीक है, सो हाउ वी कैन ओवरकम स्ट्रेस. उसके लिए वी हैव दिस 6 मेजर कंपोनेंट्स. ठीक है, बाय मैनेजिंग द स्ट्रेसर्स. ठीक है, स्ट्रेसर इज समथिंग जो कि ऑब्वियसली एक ऐसा कंपोनेंट आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है जो कि आपको स्ट्रेस देता है. बाय मैनेजिंग योर स्ट्रेस एंड बिहेवियर, बाय टाइम मैनेजमेंट, बाय एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, बाय सोशल सपोर्ट एंड बाय रिलैक्सेशन. ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली आपने खुद करनी है, कोई आपके लिए नहीं करेगा. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू ऑन योर ओन if you want to overcome your stress. मैनेज द स्ट्रेसर्स. ठीक है, मैनेज द स्ट्रेसर्स के लिए मीन्स टू से कि आपने इन्वायरमेंट में स्ट्रेस प्रोवोकिंग चीज़ों को प्रिवेंट करना है या उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी है. मैनेजिंग द इन्वायरमेंट
Focus on aspect and take one thing at a time. Imaginatively solve the problem and take help from support groups. ठीक है, मीन्स टू से कि आपको जो भी सबसे पहले तो आपने उस चीज़ को you need to identify that what thing in your environment or in your aura is basically the source of stress for you. ठीक है, उस चीज़ पे आपने फोकस करके यू नीड टू बेसिकली आइडेंटिफाई दैट थिंग फर्स्ट. ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद देन आप उसको इमेजिनेटिवली सॉल्व करेंगे. इमेजिनेटिवली सॉल्व करेंगे देन लेटर ऑन यू विल गेट टू नो द रियल सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. Manage your stress means to say accept the things that you cannot change and learn to deal with your stress and adopt coping methods. ठीक है, मीन्स टू से कि आप जो भी आपकी लाइफ में चीज़ है विच यू थिंक इज नॉट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें. Manage your behavior. Do not get fixated to past failures. Focus on what you can do now and in the future. Adopt a can-do attitude and practice anger management behavior. ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें कुछ समझाने वाली आज सच बात नहीं है. ठीक है, ये आप लोग इंग्लिश समझते हो. ठीक है, इन सब चीज़ों को आप पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ठीक है, आप अपने बिहेवियर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि पास्ट फेलियर्स में आप ना घुसे रहें एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर. एंड आप उस चीज़ को यू नो इस चीज़ को अडॉप्ट करें दैट यू कैन डू इट. ठीक है, कि आप अपने आप को बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इफ़ यू वांट टू मैनेज योर स्ट्रेस. देन टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल एंड इट इज़ यूजली इग्नोर्ड. ठीक है, अगर आप अपना टाइम मैनेज करना जानते हैं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करेंगे तो एज अ रिजल्ट आपकी आपका जो स्ट्रेस होगा वो कम हो जाएगा. ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू ईच मॉर्निंग. Prioritize your work, take short breaks in your schedule, take out time to sit back, evaluate your work and efforts. ठीक है, कि मीन्स टू से कि आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाए रोज सुबह. ठीक है, इफ़ अगर आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं एंड देन उस लिस्ट को चेक करें एंड आप उसकी प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा काम है जो कि आपने सबसे पहले करना है. आफ्टर दैट अगर आप एट द एंड ऑफ द डे उस चीज़ का एक लॉग बनाएंगे और फीडबैक देंगे, एवेलुएट करेंगे कि कितना काम आपने आज के दिन में कंप्लीट किया है, देन if you will be able to be productive so you will feel good about yourself. ठीक है, and you will notice that each day your productivity level will be increased. Learn to say no to unreasonable demands. Give yourself permission to engage and enjoy leisure time. Schedule periods of some quiet time. Learn to delegate responsibilities to your colleagues and partner in your profession. ठीक है, मीन्स टू से कि आप हर चीज़ को जो है बैलेंस लेके चलें. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपकी लाइफ में यू नीड टू हैव सम एंटरटेनमेंट एंड सम leisure time as well. So for that you need to make sure that you have some colleagues with you which are going to be there with you or your friends which are going to be there for you while you are enjoying your leisure time. Next is exercise and nutrition. Exercising 3 to 5 times a week conditions you to deal with stress. ठीक है, this is something which is highlighted nowadays very much. ठीक है, आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो वो आपको ज़रूर किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज करने के लिए जो है वो आपको एडवाइस करेगा, whether it is swimming, whether it's horse climbing, whether it's just running or jogging or it's anything, any physical activity which you like. ठीक है, उस के लिए वो जो है चीज़ आपके लिए एज अ सोर्स ऑफ एक्सरसाइज का काम करेगी एंड इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन रिलीजिंग योर हैप्पी हार्मोन्स. Keep caffeine intake to a minimum. Stop smoking. Eat less of fat and sugary food and eat more of fiber, vitamin B and vitamin C. ठीक है, मीन्स टू से कि अगर आप अपनी डाइट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, शुगरी फूड्स और फैटी जो चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस की तरफ लेके जाती हैं. यू शुड ट्राई टू ईट हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स टू दैट. सो ओवरऑल आपका जो एक लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा एक्टिव रहेगा. Next is social support. You should develop a circle of friends and family and utilize resources that can help you. Relaxation, practice progressive muscle relaxation, meditation, deep breathing exercises and engage in hobbies. ठीक है, relaxation का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब it can be anything which is basically making you relax. ठीक है, ये आपके लिए कोई बुक रीडिंग भी हो सकता है कोई मूवी देखना हो सकती है, maybe it's yoga for you, maybe it's talking to a friend, maybe it's talking to your mother. ठीक है, तो कोई भी ऐसी
एक्टिविटी जो कि आपको रिलैक्सेशन मोड में लेके जाए, वो आप जो है उसको एट द एंड ऑफ द डे ज़रूर जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आजकल हमारा बहुत ज़्यादा ये आदत है कि हम रोज़ रात को मोबाइल फ़ोन देखते हुए जो है सोते हैं। ठीक है, स्क्रीन टाइम हमारा जो है एट द एंड ऑफ द डे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली इट इज़ बिंग, ये रिसर्च के अकॉर्डिंगली है कि स्क्रीन टाइम अगर आप बेड टाइम से पहले आपका स्क्रीन टाइम हो तो इट इज़ बेसिकली प्रूवन कि वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और आपकी जो स्लीप है उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्ब करता है। तो जब भी बेड टाइम हो तो आपको हमेशा मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए, जिसमें बुक रीडिंग आ सकती है। ठीक है, जिसमें कोई ऐसी एक्टिविटी आ सकती है जिससे आपके मसल्स रिलैक्स हो सकते हैं। इट कैन बी टॉकिंग टू समवन, इट कैन बी लिसनिंग टू अ सॉन्ग विच इज़ रिलैक्सिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको रिलैक्सिंग की तरफ लेके जाए, उसको आप अगर करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ अ मेडिटेशन फॉर यू। ठीक है, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? Okay, we are going to continue. Patient stress क्या होता है? Patient stress is the stress जो कि patient को face करना पड़ता है। ठीक है, it can be due to two reasons. It can be either due to a illness or it can either be due to a hospitalization. ठीक है, stress due to illness का क्या मतलब है? Stress due to illness का मतलब ये है that a patient is suffering from a particular disease. ठीक है, तो उसको उस disease का stress होगा। ठीक है, उस disease का stress क्यों होगा? That maybe the disease is something जो कि जिसका prognosis इतना प्रॉपर नहीं है, या उसमें उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, फाइनेंशियल बर्डन है पेशेंट पे। ठीक है, उसके अलावा एक पेशेंट जो कि बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहा था, इलनेस की वजह से उसका लाइफस्टाइल जो एक्टिव था वो बहुत ज़्यादा लेसर एक्टिव हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट के लिए एक स्ट्रेस का बायस बन सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो चेंज ऑफ रोल। ठीक है, चेंज ऑफ रोल जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द फादर ऑफ द फैमिली, ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, ही और शी बिकम्स सिक। ठीक है, जैसे आपकी मदर या फादर सिक हो जाए तो क्या होता है दैट ऑब्वियसली द होल फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन द मदर और ऑन द फादर। तो ऑब्वियसली चेंज ऑफ रोल जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें हो जाता है, दैट इफ द मदर इज sick then there's nobody to look after the house and the kids. तो चेंज ऑफ रोल जो है वो इटसेल्फ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। फाइनेंशियल लॉसेस देयर, स्टिग्मेटाइजेशन, इफ द फॉर एग्जाम्पल इफ द डिजीज इज समथिंग दैट इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा एक स्टिग्मा बनी हुई हो सोसाइटी में, जैसे कि जब कोविड-19 शुरू में आया था तो इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ स्टिग्मा कि ये कोविड हो गया, इसको इसके करीब नहीं जाना या इससे बहुत ज़्यादा फासला रखना है। तो इट इज़ समथिंग जो कि पेशेंट के लिए एक स्ट्रेस का बायस बन सकता है। लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, फियर ऑफ बिकमिंग हैंडीकैप्ड एंड अनसर्टन प्रोग्नोसिस। ठीक है, अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें हैंडीकैप होने का डर है, जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में है या डायबिटिक फुट का पेशेंट है, तो उसमें हैंडीकैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसमें द पेशेंट कैन हैव अ फियर ऑफ बिकमिंग हैंडीकैप्ड और इफ द डिजीज़ हैज़ अ अनसर्टन प्रोग्नोसिस। उसके अलावा पेशेंट को स्ट्रेस हो सकता है ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है तो वहाँ पर पेशेंट का स्ट्रेस किन वजहों से हो सकता है? सबसे पहले तो लॉस ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, ऑब्वियसली इवन इफ यू आर इन अ सेपरेट रूम, अगर आप एक प्राइवेट रूम में भी हैं तो वहाँ पर ऑल द टाइम वार्ड बॉयज, नर्सेज एंड द पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो हर वक्त आप पे ऑब्जर्व, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपकी प्राइवेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लॉस ऑफ ऑटोनॉमी मीन्स टू से कि आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है इन द हॉस्पिटल, यू आर डिपेंडेंट ऑन द हॉस्पिटल स्टाफ एंड द डॉक्टर्स, कि आपने क्या खाना है, कितने बजे आपने मेडिसिन लेनी है, कब आपने सोना है, कब उठना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द हॉस्पिटल स्टाफ। सेपरेशन फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर लव्ड वंस, आपको अपने घर की आदत होती है, अपने बेड पे सोने की आदत होती है। तो ये सारी चीज़ें एज अ सेपरेशन एंजाइटी जो है कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा जो है ये देखी जाती है। नीड फॉर अ डॉक्टर्स अप्रूवल फॉर एवरीथिंग, handing over health matters, threats to social and financial circumstances and unsatisfactory information। ठीक है, unsatisfactory information means to say कि अगर हॉस्पिटल में आपको प्रॉपरली गाइड नहीं किया जा रहा रिलेटेड टू योर डिजीज, तो obviously the unsatisfactory information can provide a stress to the patient। ठीक है, रिएक्शन ऑफ पेशेंट टू है रिएक्शन ऑफ पेशेंट टू इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, उसमें पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट डिनाइल में होता है। जैसे शुरू शुरू में कोविड में आप अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, अगर उनको कोविड के सिम्टम्स आ भी रहे हो तो स्टिल दे आर इन अ डिनाइल फेस कि नहीं हमें कोविड नहीं है, हमें हो ही नहीं सकता, वी आर फॉलोइंग ऑल दी SOPs एंड वी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनीवन हु हैज कोविड। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो डिनाइल की होती है। ठीक है, उसके बाद एंगर,
Anger means to say that you are, for example, agar COVID hi ho gaya, तो they are going to be angry that we followed all the SOPs, we were, being very protective about everyone, then how come we got the disease? Thirdly, depression and then dependence. ठीक है, डिप्रेशन, अगर आपको डिजीज का प्रोग्नोसिस अनसर्टन हो, डिजीज के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सोयर हो, तो डिप्रेशन में पेशेंट जा सकता है, एंड देन लेटर ऑन डिपेंडेंस टू द to the hospital staff and to his family. Okay, next is what is psychotrauma. Psychotrauma, it is the result of extraordinary stressful events that shatter a person's sense of security, making him or her feel helpless and vulnerable in the dangerous वर्ल्ड. ठीक है, तो साइकोट्रॉमा बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट की लाइफ में, किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत ही कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट आए जिससे वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और वल्नरेबल फील करे. मीन्स टू से कि उसकी जो एक सेल्फ एस्टीम और उसका जो एक अपना कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल शैटर हो जाए. ठीक है, तो इट इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल द डेथ ऑफ अ पेरेंट्स और डेथ ऑफ अ स्पाउस और डेथ ऑफ योर किड. ठीक है, दिस इज समथिंग जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सिचुएशन में आप चले जाते हो. It is a wound to the psyche due to an experience which has endangered one's life and threatens one's identity, integrity, honor, and property. A traumatic experience can leave scars on the mind and body. ठीक है, इसमें कुछ ऐसे डेथ के अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनकी वो भी साइकोट्रॉमा से गुजरते हैं, या कोई ऐसी रॉबरी आपके घर में हुई हो जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हो, और आप बहुत ज़्यादा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं. या फॉर एग्जाम्पल इफ वेडिंग इज कैंसल्ड ऑफ समवन ऑन द डे ऑफ द वेडिंग. ठीक है, तो इस तरह के ऐसे सिचुएशंस जो कि आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा एक बड़ा स्कार छोड़ के जाए, उसको आप साइको ट्रॉमा कहेंगे. ठीक है, कॉजेस क्या हो सकते हैं? हाउस फायर, ठीक है, अ प्लेन क्रैश, अ वायलेंट क्राइम, अर्थक्वेक, फाइटिंग इन अ वॉर, डेंजरस नेबरहुड, इंड्योरिंग अ क्रॉनिक डिजीज. ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें जो कि एक साइको ट्रॉमा के तौर पे आपका काम कर सकती हैं, एंड दे कैन एक्चुअली हैव परमानेंट स्कार्स ऑन योर पर्सनैलिटी. ठीक है, जो पर्सन एक प्लेन क्रैश की वजह से, जिसका कभी भी in life, if he or she has suffered or survived a plane crash, so it can have a permanent scar on his or her mind for the rest of the life. People are more likely to be traumatized as adults if they have history of childhood trauma or if they are already experiencing a lot of stress. ठीक है, तो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है वो बहुत ज़्यादा सवेयर होता है. What is developmental trauma? Development or attachment trauma results from anything that disturbs a child's sense of safety and security. Developmental trauma का मतलब है कि वो आपकी developmental age में आपको होगा. It can be more severe when it involves betrayal or harm at the hands of a caregiver. This trauma affects negatively on the child's physical, emotional, and social development. ठीक है, what are the causes of developmental trauma? Separation from a parent, serious illness, or an unsafe environment. सेपरेशन फ्रॉम अ पेरेंट, ऑब्वियसली पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई या डाइवोर्स हो गई है, उसकी वजह से डेवलपमेंटल ट्रॉमा हो सकता है. कोई सीरियस इलनेस है, या अनसेफ एनवायरनमेंट मीन्स टू से अगर चाइल्ड अब्यूज की वजह से कोई इस तरह की सिचुएशन है, देन ऑब्वियसली डेवलपमेंटल ट्रॉमा कैन रिजल्ट. What are the normal responses to traumatic events? Normal responses में सबसे पहले guilt and self blame आ जाता है. ठीक है, जो बिल्कुल initial stage होती है, that you try to blame yourself about it, because at that stage जो पूरी society होती है वो भी आप ही को blame कर रही होती है. तो self blame is the first response you have of a traumatic event. Anxiety, feeling sad, feeling disconnected or numb, insomnia, loss of appetite, social withdrawal, and difficulty in concentrating. These symptoms last for a few days or months, then fade, but if persist, then there is a need of professional help. ठीक है, तो basically it all depends upon your own integrity, that you, how much coping ability you have. These symptoms can last for a few days or even more than a few months. If more time is uh, making you cope up with these symptoms, then you need to have a professional help. Next topic that we are going to study today is post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder, it is a condition that results from the most severe kind of
trauma. It is characterized by intrusive memories, flashbacks, or nightmares, avoiding things that remind one of the traumatic event, and living in a constant state of red alert, also known as hyper अराउजल. ठीक है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इट इज़ एनीथिंग जो कि आपकी लाइफ में कोई भी इस तरह का ट्रॉमा हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट करे, बहुत ज़्यादा परमानेंटली कोई एक स्कार आ सकता है. इसमें कोई नेचुरल डिसास्टर हो सकता है, कोई सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अटैक हो सकता है, और द रेप विक्टिम, सेक्सुअल वायलेंस जिसमें होती है. ठीक है, तो एनी ट्रॉमेटिक इवेंट जिससे आपको इस तरह का साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है उसमें हो जाए, उसको आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहेंगे. ठीक है, इसके सिम्टम्स में आप देख सकते हैं इंट्रूसिव मेमोरीज है, एंजाइटी एंड इमोशंस, अवॉइडेंस एंड नमनेस. ठीक है, एंगर होगा, इरिटेबिलिटी, गिल्ट एंड शेम, सब्सटेंस अब्यूज एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कैन आल्सो रिजल्ट. easily startle, एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल या वायलेंट बिहेवियर हो सकता है. इंट्रूसिव मेमोरीज जो कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होती हैं उसमें फ्लैशबैक्स और डिस्टर्बिंग ड्रीम्स कैन रिजल्ट. ठीक है, so what are the different techniques that we can adopt to manage the trauma? You need to educate yourself about anxiety, deep breathing exercises, learn to progressive muscle relaxation. Emotional injuries, just like physical injuries, cannot be left untreated. ठीक है, तो this is something which you need to realize that emotional injuries are also something that we need to treat. ठीक है, मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी ऐसी होती है जिसकी किसी भी किस्म की, इफ़ यू आर ट्राइंग टू overcome something, that you need to have professional help. Reintegrate yourself into your life, face your fears, and know when to seek professional help, and learn how to handle flashbacks. So this is something which you can do at your own level at first. If you, but first you need to identify that you are basically undergoing a psychotrauma. If you identify it, then later on you can cope up with it. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ. ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या होता है? बेसिकली दैट ट्रॉमा इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इट इज थॉट ऑफ समथिंग which also which always have a negative, effect on yourself, but it also has been, seen that it can have some positive aspects, and one of that is post traumatic growth. It can manifest in the form of improved relationships and a new possibility for one's future. That after a trauma you become more mature, and you if you are, for example, if you have lost a loved one, or if you have lost one of your parents, then after that trauma your relationship with the other parent is going to increase as a result. So some losses, they can produce valuable gains, and individuals may find themselves becoming more comfortable with intimacy and having a greater sense of compassion for others who experience the life difficulties. Okay, so basically, what is post traumatic growth? It means to say it is basically the positive aspect of the trauma that you are going to, say. But again, it can only be experienced once you are out of the trauma. If you're still in the trauma, and if you're still facing, or if you're still experiencing the post traumatic stress disorder psychiatric symptoms, then growth is something which is not going to be there. Growth will always be something which you're going to experience once you're out of that stress, and you are back into your daily or normal life. Okay, so that was all about today. Any questions up till now?